Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. This is a recorded lecture on mine drainage. Okay, so this is our last lecture of the mining engineering fundamentals. We'll study about the mine drainage. First of all, it is an auxiliary operation again, and we'll see how pumping curve, and we'll also see how the pumps operate. So before going into any detail, the first question which should come into mind जो हमारे में आना चाहिए कि माइन में पानी आता कहाँ से है, तो उसके उसमें सबसे चीज है कि जो सरफेस वाटर है that also flows in. So you have a mine and the water just coming from the surface can flow in this mine. And another is कि वाटर टेबल, इस पे भी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिससे आपको ये काफी क्लियर हो जाएगा. देखें, जब अंडरग्राउंड माइनिंग हो रही है, लेट्स से दिस इज योर, ये हमारी सरफेस ऑफ अर्थ है और यहाँ पर वाटर टेबल है. And if we are digging a mine, let's say like this, so we will enter the water table, so water should come in. Uh, इसके अलावा caverns होते हैं. Let's say this is the surface of the earth, and नीचे कहीं पहले से ही एक cavern है जिसके अंदर water water in that things water. So एक, एक, आप कह लें एक खाली कुछ एरिया था जिसमें पानी इकट्ठा हुआ है सीप करके, and now we are mining in that. Let's say we are mining and suddenly we touch the cavern, so the water from the cavern will come into the mine. So you have to went in but touched a cavern, so that's how the इस तरीके से भी पानी आ सकता है mine. So there are different ways माइन के अंदर पानी आ जाता है. जब माइन के अंदर पानी आ जाता है, let's see this video of like how water table come. Let's say ये देखें आपके सामने ना, let's say ये water table है और आप ऊपर से माइन करते हुए आ रहे हो, तो आप यहाँ आके टकरा रहे हो वाटर टेबल करने का, तो आपके माइन में ऑफ कोर्स पानी आएगा. Yes, ये एक रोड हेडर है जो माइन करता है. जैसे ही आप जैसे ही cross the water table, so this water will come into the mine और आपके माइन में पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा. जैसा कि आप यहाँ पे cross the water is coming in from all sides actually. So now your mine is flooded because you ruptured the water table. So आपकी माइन में पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा और देन इस पानी को देखें, एक तरीका तो उन्होंने ये किया है कि जो सील्ड इट ग्राउटिंग जैसे कहते हैं ताकि पानी ना आए, लेकिन ये ग्राउटिंग करने से पहले आपको वो पानी निकालना पड़ेगा. सो दिस व्हाट हैज टू गो आउट ऑफ द माइन. दैट्स द चैलेंज we are faced with, and that's called mine water drainage. सो हमने ये देख लिया कि माइन में पानी आ कैसे जाता है, और अब दूसरी चीज ये है कि फिर उस पानी को निकालना कैसे है.
आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी कि कैसे माइन जो है इसके अंदर पानी आया हुआ है, कैन बी फ्रॉम सरफेस और maybe they have hit the water table somewhere or an aquifer. कोई एक्विफर ऐसी रॉक जिसमें पहले से पानी मौजूद था उसको हिट कर दिया, so that can be a problem. You cannot walk, you can see water in this mine और ये water पानी में, क्योंकि when especially underground mines के अंदर you will have a lot of water coming in, seeping from the walls, from the roof. It just comes from everywhere, even from the floor. Maybe आप एक ऐसी रॉक में चले गए जिसमें पानी पहले से स्टोर था, आपने उसको हिट किया तो पानी आपके माइन में आ जाएगा. So water is almost always there, especially आप ये देख सकते हैं जैसे it can be a lot. So once ये पानी इस तरह से भर जाए तो then you cannot work in that mine. फ्लड हो जाती है. So हमें क्या करना होता है, ये सिचुएशन प्रोड्यूस होती रहती है माइंस के अंदर कि पानी आता रहता है, तो हम साथ साथ पानी को निकालते रहते हैं और अपना वर्क जारी रखते हैं. Because we keep hitting the aquifers, we keep hitting caverns, we keep hitting the water table. So of course जैसे ही आप पानी निकालने का आपको जहन में आता है तो पंप्स आपके जहन में आते हैं. यू कैन सी हियर कि कैसे हम पंप्स लगा सकते हैं सील्स में. यहाँ से पानी जो है पंप सक करेगा और जाहिर बात है उसको फिर ये एक खास हाइट तक पहुँचाएगा, अगला पंप उसको देगा और फिर इस तरह से उसको हम लाइन से बाहर निकाल सकते हैं. So in this is the way water is going out of the mine. So we need pumps. So whenever water drainage comes in mind, we need pumps. Drain water out of our mines through pumps. अच्छा, इससे पहले कि हम पंप्स के बारे में मज़ीद पढ़ें, एक और चीज़ जो पंप्स के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है एंड दैट इज़ हेड प्रेशर. प्रेशर क्या चीज़ होती है? प्रेशर इज़ बेसिकली we know it's force per unit area, so we know about it. But in pumping word, we use the word head. Actually, from pressure, we have changed the units of pressure into head because it's more easy to visualize and interpret. That's why. Let's see कि head और pressure के आपस में क्या relationship है ताकि हम pumps को सही तरीके से समझ सकें. It's time to get pumped about reading pump verbs because I'm going to explain the difference between head and pressure. Both terms are often used when talking about pump sizing, but what's the difference? Let's pull out a pump curve and find out. अमूमन एक जो पंप कर्व है उसमें आपको नज़र आएगा फ्लो रेट, यानी ये पंप का फ्लो रेट है कि कितने गैलन्स पर मिनट वो करे, और दूसरा हेड यानी वो पंप कितना ऊपर तक लेके जा सकते हैं. तो अमूमन पंप्स कर्व्स ऐसी होती हैं. सो वी नीड टू नो व्हाट इज हेड. Notice how it plots head and feet versus flow rate, typically in gallons per minute. It's stated in feet of head rather than pounds per square inch or psi of pressure. Why? Because head is fluid independent. Different liquids may have different density of ratio of density of liquids to density of water. The flow will be the same for a given amount of head. However, if we measured it for pressure, we have to have a different curve for every liquid with a different. How do we get back to pounds of pressure? Head and pressure are different, but they have a simple mathematical relationship. Imagine a tube that is अगर हेड और प्रेशर को हम समझना चाहें तो आप देख सक आप एक एक जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है कि आप 1 इंच का आप देख लें जिसकी हाइट विड्थ, जिसकी हाइट सॉरी जिसकी नीचे की दो डायमेंशन हैं, जैसे आप विड्थ और ब्रेड्थ कह सकते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, that these are 1 inches. So what we do is 1 inch by 1 inch. fill On it the with bottom of water. that tube is a pressure gauge. और इसके एक नीचे प्रेशर गेज लगा दें अगर आप, तो आप देखेंगे कि 2.31 फीट जब आप इसके अंदर पानी भरेंगे इतनी हाइट तक,
तो ये जो प्रेशर नीचे शो होगा वो एक PSI होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक PSI बराबर है, अगर 1 इंच का पाइप हो तो उसके अंदर 2.31 फीट वाटर हो तो उसका प्रेशर 1 PSI होगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि 1 इंच के पाइप के हिसाब से हमारे पास यूनिट आ गया है। सो 1 फीट जब वाटर होगा तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब है 0.434 PSI है। सो we can convert PSI into head. So or head into PSI. So just keep this in mind. हेड्स की बात करें तो माइंस के अंदर जो पंपिंग सिस्टम है या ड्रेनेज सिस्टम है उसके अंदर आपको जो पंपिंग सम्प्स नजर आएंगे। सम्प्स क्या है? सम्प लेट से आपकी एक माइन है और इस माइन के अंदर हम एक जगह पे एक छोटा सा कलेक्शन पॉइंट बना देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर पानी पहले इकट्ठा होता है, call it a sump, यानी कह सकते हैं आप इसको। तो फिर यहाँ पे हम पंप्स लगाते हैं ताकि उसको बाहर फेंक सकें। जो सम्प होते हैं सक्शन पाइप्स होते हैं। जैसे आपका पंप यहाँ है और यहाँ से पानी सक कर रहा है, पानी एक तरफ से वो सक कर रहा होता है आपका पंप और एक तरफ वो उसको डिस्चार्ज कर रहा होता है। सो सम्प्स वी हैव सक्शन पाइप्स, पंप्स हैं, डिस्चार्ज पाइप्स हैं। ये सक्शन पाइप हो जाएगा, ये डिस्चार्ज पाइप। तो फिर फिटिंग्स हैं, ऑफ कोर्स पाइप्स का आपस में जुड़ा हुआ होता है। ये काफ़ी चीज़ें होती हैं सिस्टम के अंदर। उसके बाद हम हेड्स की बात करते हैं, तो हमारे पास दो किस्म के हेड हैं, डायनेमिक और स्टैटिक। सॉरी, डायनेमिक सक्शन लिफ्ट और डायनेमिक डिस्चार्ज। सक्शन में ये होता है कि वर्टिकल डिस्टेंस अबव लिक्विड और उस प्लस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। जहाँ तक ताल्लुक है आपके डिस्चार्ज हेड का, तो डैट इज वर्टिकल डिस्चार्ज अबव पंप, फ्रिक्शन पाइप्स के अंदर, और जो प्रेशर आपको चाहिए डिस्चार्ज पे, ये उसका कॉम्बिनेशन है। अभी एक तस्वीर देखते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि व्हाट एक्चुअली इज दिस। सो इफ यू लुक एट दिस, सो जो सक्शन वर्टिकल डिस्टेंस अबव लिक्विड है वो ये है। ये आपका पंप है और ये वो फासला है, दिस इज द सेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पंप को काइंड ऑफ सक करना है, यानी राइट। सो दिस हाइट इज कॉल्ड स्टैटिक सक्शन लिफ्ट, वर्टिकल डिस्टेंस अबव द लिक्विड है पंप तक पहुंचने के लिए, ये डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक सक्शन लिफ्ट। और जारी बात है इसके अंदर ये जो पाइप जिससे जा रहा होगा उस पाइप की कोई रेजिस्टेंस होगी, add that resistance, static suction lift plus resistance, this is called suction lift। ये सारा मामला यहाँ पे हो रहा है, पंप यानी जो सक कर रहा है। फिर पंप क्या कर रहा है, उसको डिस्चार्ज कर रहा है। पंप सक किया, this is suction thing, so when suction is done then it's pumping it out, discharge, this is discharge, the yellow one is pipe ऐसे जा रहा है और then this is discharge। सो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम पंप, पंप से लेकर, ये देखें ना, ये आपका पंप है, यहाँ से लेकर ये जो ऊपर वर्टिकल डिस्टेंस है डिस्चार्ज तक, दैट्स कॉल्ड वर्टिकल डिस्चार्ज अबव पंप और स्टैटिक डिस्चार्ज हेड।
जारी बात है इस पाइप के अंदर ये जो जा रहा है डिस्चार्ज वाला इसके अंदर भी रेजिस्टेंस होगी, you should add that in the resistance also. यहाँ पे जिस प्रेशर से ये बाहर आ रहा है, that's all when you combine all these, this is called dynamic discharge head, and then dynamic suction lift. So we have dynamic suction lift, suction and then discharge. पाइप ये दो काम करता है, एक तरफ से पानी खींचता है और दूसरी तरफ वो छोड़ता है. So these are some heads. ये चीज़ है, थोड़ा सा इसको ज़रा और एलेबरेट करने के लिए आई फाउंड दिस पिक्चर टू बी वेरी गुड. सो इसके अंदर ये है कि देखें यहाँ से आपके वाटर लेवल से लेकर पंप पहले इसको सक करेगा, दिस once it's sucked then this red line, oh sorry, this yellow line is discharge, this is discharge. अब ये जो आपकी हाइट है वाटर to the pump, yes, this is suction, and then from pump से लेकर ऊपर तक discharge तक ये हाइट will call it static discharge head, and this is static suction head. So इसके अंदर आप देख रहे होंगे एल्बोज हैं, ये जैसे ये एक एल्बो है, this is an elbow. और ये यहाँ पर मैं एक पॉइंट जरूर रखना चाहूँगा कि ये जो एल्बोज है यहाँ पे जारी बात है देखें एकदम से सडन चेंज आती है फ्लो में, तो फ्लो की स्पीड कम होती है. सो ये ध्यान में रखिएगा. सो यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर कि कैसे पंप एक जगह से पानी सक करता है और फिर उसको डिस्चार्ज करता है. So, दो पार्ट्स होते हैं इसके अंदर. ये हाइट जो हाइट है ये वाली जिसमें जिस पानी से लेकर यहाँ तक की हाइट और फिर उसको डिस्चार्ज करने की हाइट, ये टोटल इतना पानी ने इतनी ऊंचाई तक आप लेकर जाना है पंप ने पानी को. So that's why it's easy to express it in the terms of head. So head की जो unit है वो length basically. So I hope ये थोड़ा it will make sense. So इसके अलावा एक velocity head होता है. Velocity head क्या होता है हम इसको देख लेते हैं. It is often convenient to represent the level of mechanical energy graphically using heights to facilitate visualization of the various terms of the Bernoulli equation. Each term in this equation has a dimension of length and represents some kind of head of a flowing fluid. First one is the pressure head. It represents the height of a fluid column that produces the static pressure. Basically this is static head. It is often convenient to represent the level of the picture head in a more practical way. So for this, consider tiny fluid particles flowing inside a tube. This fluid particle creates pressure inside the tube. And if there is any hole, the water will leak because of pressure. But if we fit a 5-centimeter tube here, the water will rise against gravity to a certain height. आपने पाइप में एक सुराख किया, वहाँ पे दूसरा पाइप अगर आप लगाते हैं जैसे कि ये लगाया, तो अगर पाइप जारी पता चल रहा है तो ये राइज करेगा उसके अंदर. Right. That's the static head. ये यहाँ तक तो ये क्या कर रहा है. And by visualizing this height, we can easily calculate static pressure. Okay, next term is called the velocity head, and we can easily visualize this with the help of P-top tube. When it is fitted, the water particles get trapped because बेसिकली फिटर ट्यूब यूज होती है वेलोसिटी हेड फाइंड करने के लिए. वेरी इसकी जो वेलोसिटी है वो भी अफेक्ट करेगी, वो भी प्रेशर को बढ़ाने का बायस है. वाटर की आप क्या करोगे, एक तेज वाटर आ रहा है उसमें सुराख करो तो वो ज्यादा ऊपर तक लेकर जाएगा. small cross-section area and reduces the particle velocity to zero. This effect increases the water column to additional height, and this additional height is called the velocity or the dynamic head. Remember, this additional height is related with the velocity of water, and hence we call it velocity head.
If flowing water have zero velocity or the water is not moving, then there is only static pressure head. So keep that in mind. Look! So I hope कि ये आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली व्हाट इज स्टैटिक हेड। ये तो फ्लूइड बगैर चल भी रहा होगा जितना है, और ये जो उसके अलावा जो ऊपर है, दिस इज ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये और ऊपर तक ये लेके जा सकता है। So basically we should know what is static velocity head. अब जो टोटल हेड होता है किसी भी सिस्टम का, दैट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक हेड, फ्रिक्शन हेड, वेलोसिटी हेड, और ये शॉक लॉसेस हेड है। इसको हम देख लेते हैं। तो ये वो सारी रुकावटें हैं जो एक पंप ने इन तमाम रुकावटों को दूर कर। दैट्स टोटल स्टैटिक हेड, एचएस, फ्रिक्शन हेड, एचएफ, शॉक लॉसेस ड्यू टू फिटिंग्स, जैसे मैंने आपको बता रहा था एल्बोज के अंदर लॉस होता है, फ्रिक्शन, जारी बात है जब पंप वो उसको फोर्स करेगा तो फ्रिक्शन उसको अपोज करेगी, तो दैट्स आल्सो अ हेड। वेलोसिटी हेड एक्चुअली सपोर्ट करता है, तो वो हमें लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारी वो है रुकावटें हैं जिनको एक पंप को क्या करना होता है, ये रोकती हैं आपके पानी को ऊपर जाने से। फ्रिक्शन है, चाहे वो शॉक लॉसेस हैं ड्यू टू फिटिंग्स, इसी तरह स्टैटिक हेड है। ये वो चीज़ें हैं, वो ऊंचाई है जिस तक हमें पहुंचाना है, ये वो चीज़ें हैं जिनके अगेंस्ट हमारे पंप में काम करना है। तो हम हमें पंप, कोई भी पंप सेलेक्ट करने से पहले हमें ये देखना होता है कि कितना हेड है, कितना हेड हमें चाहिए, यानी उसको कितना, कितनी जो रुकावटें हैं या रेजिस्टेंस उसने क्या करनी है। तो ये जो तीन है, स्टैटिक हेड, फ्रिक्शन हेड, शॉक हेड, ये माहिर करते हैं और इस हिसाब से अपना पंप सेलेक्ट करते हैं कि उसने इन तीनों को, जारी बात है अगर स्टैटिक हेड अगर आपने ऊंचाई ज़्यादा कर दिया, लेट्स से आपका पंप है और आपने इसको केस लिया है कि यहाँ तक पंप करना है, यहाँ से आप ले रहे हैं इन है और ये इस तरह से। और एक केस में ये है कि ये पंप है और आप इसको यहाँ तक लेके जाओ। ऑफ कोर्स इस पंप के अंदर स्टैटिक हेड भी इसको कम करना पड़ेगा, फ्रिक्शन भी कम है क्योंकि पाइप की लेंथ भी कम है। तो ये जो बी है इसके अंदर स्टैटिक हेड भी कम है, बी केस में स्टैटिक हेड भी कम है, फ्रिक्शन भी कम है और शॉक लॉसेस भी कम होंगे क्योंकि जोड़ भी कम लगे होंगे सेल को यहाँ पर। तो इसके अंदर हमें, बी केस के अंदर हमें छोटा पंप लगाना पड़ेगा, कम पावर वाला, और ए केस में ज़्यादा पावर। तो ये हेड का रिलेशनशिप बहुत गहरा है सिलेक्शन ऑफ द पंप, इसलिए इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो फ्रिक्शनल हेड होता है उसको मालूम करने के लिए दिस इज द फार्मूला 0.2083 Q बाई डी, वेयर Q इज द फ्लो जो आप चाहते हो कि पाइप में हो रहा हो तेजी से। जारी बात है, देखें माइन को आप, अगर आपने खाली करना है, माइन में से पानी निकालना है, तो यू विल वांट मोर फ्लो, वो आपने देखना होता है, और पानी आ रहा होता है जिस रफ्तार से माइन के अंदर हमारी कोशिश होती है उसी रफ्तार से, तो ये फ्लो वो चीज़ है Q। और D इज दी डायमीटर ऑफ द पाइप जो आप यूज कर रहे हैं। ये देखते हुए, ये दोनों चीज़ें करते हुए आप फ्रिक्शन हेड निकाल सकते हैं। और वेलोसिटी हेड ये भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एज इट इज़ एक्चुअली सपोर्टिव, इट टेक्स द थिंग अप। सो दैट्स इट। इससे पहले कि हम मज़ीद पंप्स की तरफ जाएं, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये पंप्स काम कैसे करते हैं। और इस वजह से मैंने जो एग्जांपल देखी है, जो उठाई है, वो सेंट्रीफ्यूगल पंप की है, क्योंकि अब हम इस तरफ जा रहे हैं कि देखें जब माइन में पानी आ जाता है और इकट्ठा हो गया है, या माइन के अंदर पानी आ रहा है और हमने उसको निकालना है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पंप है। अब क्वेश्चन, ये एक माइनिंग इंजीनियर है, तो ये आपका काम होता है कि यू शुड सेलेक्ट अ पंप। जैसे लेट से अगर आप
घर के अंदर हैं और अगर आपके घर में सिर्फ 2 बंदे हैं, तो अब अगर आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, और अगर आप ऊबर पे जा रहे हैं तो आपके लिए एक मोटरसाइकिल भी आप बुला सकते हैं अगर आप एक ही बंदे हैं, तो आपने सिलेक्ट करना होता है। इसी तरह अगर आपके पास 3 बंदे हैं, फिर आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं। आप रिक्शा भी बुला सकते हैं, आप एक लग्जरी कार भी बुला सकते हैं, आप कार कार भी बुला सकते हैं। वहाँ पे आपकी प्राइस, फिर आप बहुत सारे फैक्टर्स देखेंगे कि जो आपके साथ लोग जा रहे हैं, लेट्स से अगर वो बूढ़े हैं तो आप जरा थोड़ा उस तरफ चले जाएंगे, अ, थोड़ी लग्जरी की तरफ चले जाएंगे। बट अगर जवान है, वांट से मनी, आप रिक्शे की तरफ शायद चले जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू मेक चॉइसेस। सेम इज द केस जब पानी भरता है माइन के अंदर, या माइन के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने कौन सा पंप सेलेक्ट करना है। तो जो उसके क्राइटेरिया हैं वो हम देखना चाहेंगे इस माइन ड्रेनेज के अंदर। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक अवे, द सिलेक्शन ऑफ द पंप। बस इफ यू सेलेक्ट द रॉन्ग साइज ऑफ द पंप, अगर आपका पंप का साइज अगर आपने गलत, तो पानी ज़्यादा लेट से आपके माइंड में आ रहा है और निकलेगा कम, तो पानी तो फिर उस तरफ भरता रहेगा। इसी तरह अगर आप बहुत बड़ा पंप ले आते हैं, तो दैट विल बी द वेस्टेज ऑफ मनी एंड आल्सो द पावर। सो वी नीड टू सेलेक्ट अ पंप व्हिच इज suitable for our job। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि पंप काम कैसे करता है, ताकि हम फिर इस पर मजीद इसकी सिलेक्शन में बात कर सकें। Centrifugal pumps are the most preferred pumping devices in the hydraulic world. In this video, we will have a conceptual overview of working of centrifugal pumps. At the heart of the system lies the impeller. It has got ये बेसिकली इम्पेलर है, इसको बड़े गौर से देखिएगा। इम्पेलर के डिफरेंट साइज हो सकते हैं, डिफरेंट साइजेस का फिर जो फ्लो रेट होगा वो भी डिफरेंट होगा, एफिशिएंसी भी। a series of curved vanes fitted inside shroud plates. The impeller is always immersed in water. When the impeller is made to rotate, it makes the fluid surrounding it also rotate. This imparts centrifugal force to water particles, and the water moves radially out. Since rotational mechanical energy is transferred to the fluid, at discharge sides of the impeller, both pressure and kinetic energy of water will rise. At suction side, water is getting displaced, so a negative pressure will be induced at I. Such low pressure helps in sucking fresh water stream into the system again. तो बेसिकली इसके घूमने की वजह से इसका जो सक्शन पावर है वो भी इट्स नॉट सक्शन, ये ज़हन में रखिएगा। बेसिकली होता ही है कि हम यहाँ पे प्रेशर जब कम कर देते हैं, लेट्स से जब भी घूमता है यहाँ पे, याद रखिएगा, देयर इज नो नथिंग लाइक यस, नो पंप सक्स एक्चुअली। व्हाट यू डू इज यू लोअर द प्रेशर हियर। जब यहाँ पे प्रेशर लो हो गया तो क्या होगा, देखें इसके ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो जाहिर बात है अगर ये प्रेशर ज्यादा है तो फिर ये इट विल मेक द वाटर राइज। सो इट्स बेसिकली लाइक दिस, इट्स atmospheric pressure which is forcing it up. It's not like suction. The only thing you do is you create a low pressure here ताकि ये higher pressure से lower pressure, so keep that in mind. And this process continues. और ये हम centrifugal pump देख रहे हैं। This is the reason why priming is important for centrifugal pumps. If no water is present initially, the negative pressure developed by rotating air at eye of impeller will be negligibly small to suck fresh stream of water. Impeller is fitted inside a casing. So the water moving out will be collected inside it and will move in the same direction of rotation of impeller to the discharge nozzle. अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि this is suction, so called suction, and this is from where it is discharging। और ये centrifugal pump है, जैसा कि
this is discharge और ये basically आपकी this is suction. So ये दो parts होते हैं. So that's how centrifugal. और ये ना पानी के अंदर submerged भी हो सकता है centrifugal pump. Works there also. So that's how a pump works mainly. Here you can note one specialty of casing. It has got increasing area along the flow direction. Such increasing area will help in accommodating newly added water stream and will also help in reducing exit flow velocity. Reduction in flow velocity will result in increase in static vanes inside of. If pressure at suction side of impeller goes below vapor pressure of water, a dangerous phenomenon could happen. ये थोड़ा सा centrifugal pump था. हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. That's how a pump works. यहाँ पर अब ये बात करना जो जो आपको हॉर्स पावर चाहिए वाटर हॉर्स पावर वो आपने हमें कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है ताकि हमें पता चले कि हमें कितने हॉर्स पावर का पंप लेना है या कितने हॉर्स पावर चाहिए हमें. दैट्स द फॉर्मूला वेयर क्यू ये जो है आपको फ्लो कितना चाहिए बेसिकली एंड दिस इज अ कन्वर्जन फैक्टर फॉर वाटर. एच इज द हेड जो फीड के अंदर जितना ऊपर आपने जितने ऊंचाई तक लेके जाना है. दिस इज आल्सो अगेन अनदर कन्वर्जन फैक्टर फ्रॉम feed pound per minute. So the basic thing is the horsepower can be written as HP. This is equal to QH over 3960, where Q is the flow you want, H is कि कितना पंप को कितना हेड है. Head means the height you want, static head, suction head, friction कितनी है, shock losses कितने होंगे, ये सारा कुछ इस H के अंदर आ जाता है. तो उसी हिसाब से हमें पंप की हॉर्स पावर चाहिए होगी. दिस इज द फॉर्मूला. सो ब्रेक हॉर्स पावर का जो फॉर्मूला है इसके अंदर अगर आप देखें तो एक चीज़ ऐड हुई है. बाकी सारे का सारा फॉर्मूला यही है. QH over 3960 एंड देन E ऐड हुआ है. दिस E is actually efficiency. होता असल में ये है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसकी वजह ये है कि देखें कोई भी पंप है 100% एफिशिएंट नहीं होगा. तो ब्रेक हॉर्स पावर वो हॉर्स पावर होती है जो पंप के इनपुट शाफ्ट पे आप दे रहे होते हैं और इसके अंदर से कोई अभी तक लॉसेस नहीं हुए. लेकिन आपको पता है कि पंप को इनपुट शाफ्ट पे जो आप पावर दे रहे हैं पंप को घुमाने के काम आएगी. गियर बॉक्स में कुछ ना कुछ एनर्जी डिसिपेट हो जाती है. पंप के मुख्तलिफ जगहों पे पंप के अंदर अंदर ही एनर्जी डिसिपेट हो जाती है और जो एनर्जी पंप लगा रहा होता है वो एनर्जी नहीं है जो आप यहाँ पे दे रहे हैं इसको. यानी दैट्स द ब्रेक हॉर्स पावर. जो यानी जो पावर ब्रेक हॉर्स पावर आप यहाँ दे रहे हैं that's not what is going here. क्यों लॉस होगा ये कोई ना कोई लॉस होगा एंड दैट लॉस डिपेंड्स अपॉन एफिशिएंसी. इसलिए जो ब्रेक हॉर्स पावर आपको देनी है वो ज़्यादा देनी है जितनी यहाँ रिक्वायर्ड होगी एफिशिएंसी के हिसाब से. हॉर्स पावर लेट्स से आपको हॉर्स पावर रिक्वायर्ड है आप कह लें 100 रिक्वायर्ड है तो आपको यहाँ पे 130 देनी पड़ेगी ब्रेक हॉर्स पावर क्योंकि आपको पता है कि ये 30 लूज हो जाना है. सो दैट्स बेसिकली व्हाट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द ब्रेक हॉर्स पावर. So these are the formulas which you should keep in mind. यहाँ तो ब्रेक हॉर्स पावर का अच्छा. उसके बाद हम ना अब ये एक वीडियो है which deals with the pump curve basics. I think I should stop the lecture here और हम फिर इस लेक्चर पे एक उसमें ताकि दो पार्ट्स में हो जाए. It will be easy for